Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss copper T, and copper IUCD is a long-acting reversible contraception method, and it is T-shaped and it contains copper on its horizontal as well as on its vertical arm. And what is the mechanism of action? It basically causes a local inflammatory reaction within the uterine cavity, which makes the intrauterine environment unfavorable for implantation. And this picture shows three types of intrauterine contraceptive devices. First one is Mirena, and the second one is copper T, and third one is multi-load. So what are the indications and contraindications of copper IUCD? What about indications? Indications when the contraception is required, when the long-acting contraception is required, and when estrogen is not indicated or contraindicated, and pills are not well tolerated. Poor compliance, long-term reversible contraception is desirable, and emergency contraception within 5 days of ovulation in case of unprotected coitus on patient's choice. And in case of Asherman syndrome's treatment, you know what is the Asherman syndrome? It is the formation of adherence within the uterine cavity, and after radiolysis we will place the IUCD into the uterine cavity. Okay. Next is contraindications. Pregnancy is a contraindication, uterine anomalies is the contraindication, and acute inflammatory disease, postpartum endometritis, any unknown undiagnosed vaginal bleeding, or suspected uterine or cervical carcinoma, and untreated infections of cervix or vagina, and any previous hypersensitivity, known hypersensitivity to the any component of this product. And what about the prerequisites? For prerequisites, before insertion of the IUCD we will exclude contraindications, and by taking detailed history, physical examination, and to rule out any pelvic pathology. We will counsel the patient, take the consent, and explain the procedure, indication, advantages, disadvantages, complications, and we will discuss with the patient about its failure rate, duration of its use, and when to remove and how to follow this after placing the IUCD, and about insertion, and taking the informed consent. Then we will proceed for the procedure in the outpatient department, and under aseptic techniques. And to memorize all this, I have made the mnemonic like C4, P2, and E6. What C4 is? C1 is confirm indication, C2 is rule out contraindications, C3 is counsel the patient, C4 is take informed consent. Okay, what P2 is place of the procedure. In case of IUCD it is outpatient department. Position of the procedure in case of IUCD it is dorsal lithotomy position. And what is E6? E6 is ensure what? Ensure the equipment, ensure staff, ensure bladder empty bladder, and ensure adequate light, adequate analgesia if required, ensure adequate aseptic measures and adequate exposure. And after giving this all these aseptic measures, we will proceed for the procedure. Okay. What are the steps? First, again, ensure the empty bladder and under good light, and ensure the trolley, assistant, staff, everyone should be ensured. And first step is to partially open the package and keep it at one corner of the trolley away from the sterilized instruments. Then we will make I will make the dorsal position of the patient, and I will scrub my hands for my own sterilization, and I will load the IUCD device not earlier than 5 minutes before the insertion. Okay, within just before inserting the IUCD we will load it. The loading is the first and most important step in the IUCD insertion. After loading, I will keep the device on the trolley, and loading means putting the limbs of T, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो आर्म है उसके जो लिम्स हैं उसको अपने इंसर्शन ट्यूब के अंदर डालना है, ठीक है. एंड द डिवाइस एंड देन क्लीन एंड ड्रिप द पेशेंट. देन आई विल डू द बाय मैनुअल एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी
चाहिए. देन आई विल clean the cervix and antiseptic swab in a single circular motion. Then hold the anterior lip of the cervix with the help of tenaculum. Then I will remove tenaculum यूज़ कर सकते हैं, valsalum भी यूज़ कर सकते हैं. Then I will remove the angle between the uterus and cervix by straightening the cervix by applying the gentle traction on the tenaculum to ensure easy insertion of the sound and device. आपको पता है कि यूट्रस जो है वो एंटीफ्लैक्स या रिट्रोवर्टेड होता है, रिट्रोवर्टेड होता है या एंटीवर्टेड होता है, तो उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा हमने स्ट्रेटन करना है ताकि हम इजीली इंसर्ट कर सकें बाय पुलिंग द टेनाकुलम, जिससे हमने किसको होल्ड किया हुआ है, एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को. Then I will pass the sound into the uterine cavity to measure the size of the uterus, and then we will adjust the device flange according to the size of the uterus measured by the uterine sound, and keep the flange stationary and move the insertion tube over the scale provided with the device to adjust according to the uterine size. Then it's ready to insert, and then we will introduce a loaded device through the cervical canal into the uterine cavity until it touches the fundus of the uterus. When resistance is felt and flange will be touching outer surface of the cervix. Now what I will do, I will hand over the tenaculum to my assistant. I am going to release the device from the insertion tube by holding. Now the this release is very important. Try to understand it by holding the solid rod स्टेशनरी, सॉलिड रॉड को हमने स्टेशनरी रखना है और विदड्रॉ करना है इंसर्शन ट्यूब को बैकवर्ड. सिर्फ इंसर्शन ट्यूब को हमने बैकवर्ड विदड्रॉ करना है, सॉलिड रॉड को बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि आपने पुश नहीं करना, आपने पुल करना है. ठीक है, डोंट पुश, जस्ट पुल. This will release the arms of the tube, and after arms are released, the insertion tube should be gently moved upward until the resistance. फिर हमने थोड़ा सा उसको gently upward move करना है ताकि वो फंडस को टच हो जाए और अपनी जगह पे स्टेबल हो जाए. This will assure placement of the T at the highest level within the uterine cavity. Then we will withdraw the piston while keeping the insertion tube. अब हमने इंसर्शन ट्यूब को स्टेशनरी रखना है और जो बाहर स्टेशनरी रॉड था उसको जो सॉलिड रॉड था उसको हमने रिमूव कर देना. देन विदड्रॉ द इंसर्शन. उसके बाद फिर आपने स्लोली जो है वो इंसर्शन ट्यूब को भी रिमूव कर देना है और फिर कट कर देना है थ्रेड को 2 to 3 सेंटीमीटर आउटसाइड द सर्विक्स वाइल द इंसर्शन ट्यूब इज स्टिल इनसाइड द विजाइना. उसको आपने कट कर देना है. उस इंसर्शन ट्यूब को आप रिमूव कर चुके होंगे ना. Then I will withdraw the insertion tube completely, and after completing the procedure I will remove the instruments remove कर दें, थॉर्पिंग पोजीशन को भी रिकवर कर दें और उसके बाद फिर ड्रेसअप करें पेशेंट को और थैंक्स बोलें उसको, एंड इंस्ट्रक्शंस उसको दें कि फॉर गोइंग होम के माइनर साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और जैसे कि लाइक स्पॉटिंग, पेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, some kind of heavy bleeding maybe within first 3 to 6 cycles, but she should be reassured that these will be settled spontaneously and no specific treatment will be required, or high chances of expulsion device after the first cycle, so she should advise to come after the next periods to ensure that the device is in situ कि अपनी जगह पर ही है डिवाइस. तो इसके लिए वो नेक्स्ट पीरियड्स के बाद एक दफ़ा आप उसको फॉलोअप के लिए बुला लें. और देन शी शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू फील फॉर द थ्रेड आफ्टर एवरी मेंसेस. इफ द थ्रेड इज़ नॉट फेल्ट शी शुड इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर. अब ये थोड़ा सा इसको देख लें पिक्टोरियल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके. ये सबसे पहले ये सॉलिड रॉड है, ये इंसर्शन ट्यूब है, और दिस इज़ फ्लेंज, और फिर जो कॉपर टी है इसका ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, ये वर्टिकल आर्म है, और ये नीचे थ्रेड है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने हाफ पैकेट को ओपन करना है और एक हाथ से आपने उसके इंसर्शन ट्यूब को पकड़ना है और दूसरे हाथ के इंडेक्स और थंब के साथ आपने उसकी जो दोनों हॉरिजॉन्टल आर्म्स हैं उनको आपने पिंच करना है और उसको आपने इंसर्शन ट्यूब के अंदर एंटर करना है. ठीक, नेक्स्ट क्या है कि जी अब आपने रिट्रैक्ट करना है, और इसको हमने क्या कहा था कि हमने उसको जब यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करना है वो, तो उसके बाद हमने सॉलिड रॉड को स्टेशनरी रखना है और सिर्फ इंसर्शन ट्यूब को हमने रिट्रैक्ट करना है रिलीज़ करने के लिए. ठीक है, मैंने आपको कहा 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज़ लोडिंग, नंबर 2 इज़ रिलीजिंग द आर्म्स. तो ये रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद जब रिलीज़ कर लिया तो फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने कहा था कि हम करेंगे मूव फॉरवर्ड ताकि वो कैविटी के साथ एडजस्ट हो जाए. ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, किसको विड्रॉ करना है,
सबसे पहले सॉलिड रॉड को निकालना है, उसके बाद फिर हम स्टेशनरी ट्यूब को निकालेंगे, इंसर्शन ट्यूब को फिर हम निकालेंगे। और एडवांटेजेस क्या हैं? लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है, कंप्लाइंस का कोई इशू नहीं है इसमें, चीप कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ऑल्टरनेटिव टू आप स्टेरिलाइजेशन है, क्योंकि इसका जो है फेलियर रेट दैट इज़ लेस देन 1/100। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज रिस्क ऑफ पीआईडी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करता ना इस वजह से। और दिस नीड्स मोटिवेशन एज वेल, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स होते हैं इसके अंदर पेशेंट के। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? ट्रॉमा हो सकता है सर्विक्स को, परफोरेशन 1 in 1000 हो सकती है, एक्सपल्शन 1 in 20 विद इन फर्स्ट 3 months हो सकते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क 1 in 100 इन फर्स्ट 3 weeks में, और मिसप्लेस्ड रिजल्टिंग इन इरोजन इनटू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट इज़ साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, यूटेरिनल डिस्चार्ज हो सकता है, क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकती है, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, these can occur. And what about failure rate? Less than 1 in 100, and for Mirena it's 0.1%, and for copper IUCD it is 0.6 to 0.8%. एंड ड्यूरेशन अगर कॉपर टी है 380 वाली, तो इट कैन बी यूज फॉर अप टू 10 years एज वेल। अदर कॉपर डिवाइसेस मे बी फॉर 5 years, एंड टाइम फॉर इंसर्शन क्या है कि फर्स्ट ऑफ द साइकिल एनी टाइम सून आफ्टर द मेंसेस इज आइडियल, एज इंसर्शन इज ईजी एट दिस टाइम बिकॉज द सर्विक्स इज relatively open. And time of removal, observe other methods of the contraception for 5 days before removal. जब आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो कोई और मेथड जो है वो आप उससे 5 days पहले से स्टार्ट कर दें, कंटिन्यू करें टिल नेक्स्ट पीरियड, एंड इफ़ रिमूवल इज़ डन इन द फॉलिकुलर फेज एंड नो नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अगर आप उसको लूटियल फेज के अंदर रिमूव करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट